Hello students, most welcome in the second lecture of applicable mathematics third. तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखे थे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट, है ना। और उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं एंड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं एंड पार्टीशन क्या होता है बेसिकली। तो जो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऐसा रिलेशन जो तीनों टाइप का रिलेशन शो कर रहा हो। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी एंड होप सो कि आपने लास्ट लेक्चर विजिट कर लिया होगा, देख लिया होगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पढ़ें तो एक नोटबुक बनाएं और सारा जो कंटेंट है, जो भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर लिखते हैं, वो सारा आप नोट डाउन करें और प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। ओके, आप केवल लेक्चर को देखें ही ना, देखने से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, बट आप एग्जामिनेशन के लिए आप तभी प्रिपेयर हो पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक्सरसाइजेस करिए अपने से। ओके, सो लेट्स बिगिन today's lecture. Okay, so equivalence relation, it means a relation which is reflexive, symmetric, and transitive is called an equivalence relation. So let's define it. So a relation R on a set, non-empty set, on a set A, okay, is called an equivalence relation. Sorry, just a second. Called an equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric, and transitive. Okay, so you can easily see it means if and only if. What is the definition for reflexive? We know the definition for reflexive, that A is related to A for all A in A. ठीक है। And second, we know the definition for the symmetric. If A is related to B, then B should be related to A. This implies B is related to A. Okay, for all pair A comma B. And third one, for the transitive, if A is related to B and B is related to another element C, then A should be related to C. Okay, this implies that is A is related to C for all A comma B comma C which is belonging to A. Okay, so a relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric, and transitive. Reflexive means that every element related to itself, and symmetric means if A is related to B, then B is related to A. And if we are saying about the transitive relation, it means A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Okay, so this is the relation. This type of relation is said to be equivalence relation. Okay, समझ गए। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करा था
कि परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन इज द परपेंडिकुलर, एंड हमने एक सिमिलरिटी का रिलेशन डिफाइन करा था कि एक रिलेशन हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो रिलेशन है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हमने देखा था कि वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, ठीक है। बट परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन था, परपेंडिकुलर लाइंस का जो रिलेशन था, वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होता था, है ना। दैट वाज नॉट ट्रांजिटिव एंड आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। सो फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट से, so if you are just saying that here, so let A be the set of all triangles, drawn in a plane, and R be the relation, and R be the relation, is similar to, okay, on A. Then R is an equivalence relation. Equivalence relation. Okay. In a similar way, if you are just talk about perpendicular of line, मतलब वो एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, तो इक्विवेलेंस नहीं है, तो उसको भी आप फॉर द इंफॉर्मेशन यू जस्ट राइट हियर, लेट ए बी the set of all triangles, so a set of all straight line, sorry, set of all straight lines drawn in plane, and this is R be the relation is perpendicular. Perpendicular to, okay, on A. Then R is not a equivalence relation. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बना था और ट्रांजिटिव नहीं बना था, है ना। दैट वाज नॉट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव. R is not an equivalence relation. Okay, so these are examples. You can say, you can also prove so many examples here. तो जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लिया, देन वी जस्ट टॉक अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस. तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव, मतलब हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो एलिमेंट जिन भी एलिमेंट से रिलेट करता है विद दैट रिलेशन, उनका जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास. Okay, so let's define the equivalence class and then we solve so many problems, so many examples. Okay, so let's define here equivalence class. Equivalence class. So let's define.
सो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, हमने एक रिलेशन लिया और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वी विल कलेक्ट दोज पॉइंट्स which is related to a single point. Okay, so let r be an equivalence relation on a set A. Okay, so let R be an equivalence relation on a set A if there is an element A belonging to A, then the set of all elements, if you just say a general point X which is belonging to A, such that this is X is related to A. Collection of all those points which are related to A. It's called equivalence class of the point A. Okay. So we have here. So this is your X related to A. It's called the equivalence class of A, and it is denoted by लाइक दिस. ओके, समटाइम्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या समटाइम्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार ऐसे बार लगा दिया जाता है. तो यू कैन जस्ट यूज यूर नेम. मैं मोस्टली ये यूज करूंगा, दैट इज इन अ बॉक्स. ओके, thus you can define like this. Thus you, if you are saying the equivalence class of a point A is just equal to X such that X a member from A and X is related to A. Okay, got it? So this is a collection of all those points from the A which is related to A. Okay, so उनको हम उसे हम क्या बोलते हैं? That is called equivalence class of the point A. Okay, got it? So in general you can just सी कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं वो हमारे सेट को पार्टीशन कर देते हैं. पार्टीशन इन द सेंस कि हमारे पास डिसजॉइंट सबसेट्स मिल जाएंगे ए कैपिटल ए के, जो कि उनका यूनियन करने पर कैपिटल ए बन जाएगा, और वो सारे के सारे जो क्लासेस होंगे दैट विल बी डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. ओके, सो लेट्स इन जनरल यू कैन जस्ट से, sorry, in general if we are saying if R is an equivalence relation on a set A, then this R divides A into mutually disjoint. म्यूचुअली डिस्जॉइंट मीन्स एक दूसरे से डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, इनटू
mutually disjoint subsets AI called partition of A satisfying number first, that uh, if you are taking any of the subset, then every element of this AI is related to each other, है ना? तो all elements of AI are related to each other for all I. Okay. Number second, that no element AI is related to the another subset. Okay. So no element of AI is related to any element of other class of AJ if this is I is not equals to J. Third one, if you are taking union of all these classes, you will get A again. So you are taking the union of all these classes is just equal to A, and these are disjoint. It means AI intersection AJ is just empty, है ना? If I is not equals to J. Okay, so these subsets are called classes, equivalence classes. So the subsets AI are equivalence classes. Okay, and तो अगर कोई रिलेशन है तो वी कैन एबल टू पार्टीशन दैट सेट इन द डिसजॉइंट क्लासेस. ओके. एंड अगर हमारे पास कोई कोई एक पार्टीशन गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक रिलेशन हो. दोनों चीजें हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझते हैं कि साइड में कि व्हाट इज पार्टीशन. तो पार्टीशन जैसे हमने बताया ना कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है और इसके हमने कोई सबसेट्स ले लिए, ए आई सबसेट ले लिए, A1 A2 A3 इस तरीके से अप टू सपोज दैट AN. तो ये जो कलेक्शन है इसमें ये सारे के सारे ए आई विद एनदर एजी, मतलब कोई दूसरे सेट के साथ, ये दोनों सभी के सभी डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट का मतलब है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इनका. मतलब जब इंटरसेक्शन लेंगे इनका तो क्या आ जाएगा? इम्पटी सेट आ जाएगा. ठीक. एंड दूसरा, ये सारे के सारे ए आई का यूनियन जब हम ले रहे हैं तो वी आर गेटिंग ए. तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन. तो जब हम कोई रिलेशन लेते हैं तो उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में जो हमें इक्विवेलेंस क्लासेस मिलती हैं, तो इक्विवेलेंस क्लासेस को लेकर हम उस सेट को पार्टीशन कर सकते हैं. ठीक है. और अगर हमारे पास किसी सेट का एक पार्टीशन गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई इक्विवेलेंस रिलेशन रहा होगा. दोनों चीजें हमारे पास ट्रू होती हैं. ठीक है. तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू इन दिस केस. तो यू कैन जस्ट हैव हियर, you can say converse is also true. It's also true. Converse is also true. So you can just rough this thing. Okay. So you can just say कि for any given partition, for a given partition,
for a given partition of a set we have an equivalence relation as a union of disjoint non-empty subsets of A. Then there exists an equivalence relation. An equivalence relation on A for which these these subsets on A for which these subsets are distinct equivalence classes. ओके। तो अगर इसको हम देखना चाहें तो वी कैन आल्सो सी क्लियरली। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर a partition of the set Z of integers है ना। So partition of the set, this set of integers is given by, हमने एक पार्टीशन ले लिया, 3 mutually disjoint सबसेट्स, और हमने कुछ इस तरीके डिफाइन किया A1 A2 and A3, these are 3 mutually disjoint subsets whose union is also Z, whose union is Z. Okay, so where this you can just have A1 is what, A1 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं that is equals to -6 -3 0 3 6 and 9, ये सारे इंटीजर्स हैं हमारे। ओके, तो दिस इज समथिंग पार्टीशन, दिस इज A1 A2 एंड A3, क्योंकि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं और साथ साथ में हमारे पास ये जो है इनका यूनियन करने पर पूरा पूरा हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट आ जा रहा है, दैट इज योर जेड। तो दैट इज इक्वल्स टू -5 -2 1 4 5 and A3 is what, that is your -4 -1 2 5 and 8 in this way। ठीक, तो अब अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू दैट कि ये हमारे पास A1 A2 एंड A3 आर द इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो लेट्स define a relation R on the set of integers by like this। तो हमने कुछ रिलेशन R कुछ इस तरीके डिफाइन करा that A comma B is the pair collection of A comma B, and A and B are from set of integer obviously, and this A minus B is divisible by 3 by 3। so obviously बात है, this is an equivalence relation,
ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो वी कैन इजिली शो कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज a माइनस ए इज जीरो एंड जीरो डिविजिबल बाई थ्री। इफ a डिविजिबल बाई इफ a माइनस b इफ a माइनस b डिविजिबल बाई थ्री इट मीन्स a रिलेटेड टू b। तो उसका निगेटिव भी रिलेट करता है, इसका मतलब माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस b इज आल्सो रिलेटेड बाई थ्री एंड b माइनस a डिविजिबल बाई थ्री। ओके, एंड देन we can also prove it is transitive। तो ये जो रिलेशन है that is an equivalence relation, तो we can easily show clearly, you can say clearly relation is or is equivalence relation। अब इसकी जरा एक डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस देख लेते हैं, ठीक है। देन यू कैन इजीली हैव, so here you can say a1 consist, जो above हमने a1 लिखा है, of all elements all those integers in Z which are related to जीरो, है ना। ये है। इसी तरीके से A2 की अगर बात करें तो A2 कंसिस्ट विद दिस रिलेशन, दिस इज द रिलेशन वी हैव, consists of all those integers in Z which are related to 1 to 1, है ना। And in the last you can just see A3 consists of all those integers in Z which are related to 2। Okay, so you can just see कि this is A1 is the class of 0 element and A2 is class of 1 element and A3 is the class of 2। Okay, so and in fact you can say कि हमारे पास जितने भी 3 के मल्टीपल है ना, that will be in A1 3 times of key। एंड अगर हम A2 क्लास लिखें तो क्योंकि हम इन द प्लेस ऑफ जीरो वी कैन आल्सो राइट अनदर मेंबर फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो दिस इज 3k+1, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। एंड दिस इज योर A3 इज एनी 3k+2 टाइप का मेंबर फॉर ऑल k इन जेड। ओके, तो वी कैन सी जिली अगर हमारे पास किसी सेट का पार्टीशन गिवन है तो उसके रिस्पेक्टिव कोई ना कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हमको मिल जाएगा। और अगर हमको कोई इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम इक्विवेलेंस क्लासेस कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी डिसजॉइंट इनफ। हम अभी नेक्स्ट क्लास में प्रूव भी करेंगे कि हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो वो या तो वो आइडेंटिकल होगी या फिर वो डिसजॉइंट होती है, तो उसको हम प्रूव भी करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी हम लोग इसके बारे में दो चीजें हमने डिफिनीशंस पढ़ी, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, कलेक्शन विद फॉर एलिमेंट ए फ्रॉम द कैपिटल ए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू ए, ए से जो भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो। हाँ, तो एक चीज तो क्लियर है, अगर हमने कोई एलिमेंट लिया ए, ठीक, फ्रॉम ए, ठीक है, देन ए इज रिलेटेड टू ए बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ए इज रिलेटेड टू ए,
ठीक, तो दिस इंप्लाइज ए एट लीस्ट इज देयर, कम से कम ए तो वहां पर है ही है उसकी क्लास में। तो इसका मतलब है जो इक्विवेलेंस क्लास होती है किसी भी एलिमेंट की, दैट इज नॉन इम्पटी, वो इम्पटी कभी नहीं होती। ओके, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, फिर हमने इसको देखा कि in general, if R is an equivalence relation on a set A, then R divides A into mutually disjoint subsets AI called the partitions of A, है ना? वो उसको partition मतलब उसको mutually disjoint subsets, that is called mutually disjoint classes, okay, of A, satisfying the condition that all elements of AI, AI मतलब A1 A2 एंड A3 इस तरीके के जो सबसेट्स बनेंगे, आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। मतलब एक अगर हम A1 कलेक्शन है, डिसजॉइंट कोई हमारा क्लास है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो एक A1 सेट जो एक क्लास है, एक दूसरी क्लास है, ठीक है, तो एक क्लास के जो एलिमेंट है वो दूसरी क्लास के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड हमने क्या पॉइंट लिखा था? नो एलिमेंट ऑफ, सॉरी, थर्ड वन इज यूनियन ऑफ ऑल द ए आई ए वन ए टू एन एट वी गेट दिस ए, है ना? तो जो हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स एआई पार्टीशन लिखा है, तो उसमें पार्टीशन हम तभी कहेंगे इफ यू आर टेकिंग यूनियन ऑफ ऑल द ए वन ए टू एंड ए3 एंड यू गेट होल सेट ए। ओके, एंड दिस सेट शुड बी म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल्स टू इम्पटी। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए किसी दूसरे में, तो उसको हम पार्टीशन बोलेंगे। तो जो ये सबसेट्स हैं दैट आर नथिंग दैट आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, ये तो हमने ये देखा कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में वी हैव डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस दैट फॉर्म अ पार्टीशन, जो एक पार्टीशन को बनाते हैं। अगर किसी सेट का एक पार्टीशन गिवन है, पार्टीशन मतलब वही हमने जो बताया था अभी कि हमारे पास डिसजॉइंट सबसेट्स हैं जिनका यूनियन करने पर ए आ जाता है और सारे के सारे वो डिसजॉइंट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, उनके बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इम्पटी बन रहे हैं। ठीक, सो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू फॉर दिस कि अगर हमारे पास किसी सेट का पार्टीशन मौजूद है तो उसके रिस्पेक्ट में हम एक रिलेशन फॉर्म होगा। उसके लिए हमने एग्जांपल भी देखा था। तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू फॉर अ गिवन पार्टीशन ऑफ अ सेट ए as a union of disjoint non-empty subsets of A. There exists an equivalence relation on A for which these subsets are distinct equivalence classes. तो वो equivalence classes के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर हमने एक पार्टीशन ले लिया जेट का जिसके अंदर तीन हमने सेट लिखे, A1 A2 एंड A3, और इसमें सारे एलिमेंट सारे इंटीजर्स कलेक्ट आ जा रहे हैं, बट ये A1 A2 एंड A3 डिसजॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? पार्टीशन। फिर हमने एक रिलेशन लिखा R जो इस पार्टीशन को फॉलो करता है, ठीक है, इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग है, तो जिसमें हमने लिखा A माइनस बी डिविजिबल बाई 3। तो इससे हमारे पास तीन क्लासेस बनेंगी, एक जीरो की, एक वन की और एक टू की, जो इन A1 A2 और A3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट लेके हम इसके क्लासेस को फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, दैट इज आल्सो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो 6, इस तरीके से क्लासेस लिखते हैं। मतलब इससे कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उस क्लास का, है ना? जैसे कि ये जीरो हम रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, अदर भी एलिमेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ओके, इसमें भी जैसे हमने टू को बोला, और अदर भी एलिमेंट वी कैन एबल टू से इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन वी हैव दीज थ्री डिसजॉइंट म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टीशन गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम एक रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे पास डिफिनीशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस, एंड थोड़ा सा हमने ओवरव्यू करा कि हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस को हम कैसे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना? कुछ नहीं, ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो, और कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है वो टेक्निक्स भी हमें आएंगी। तो आप लोग
एक एक चीज को नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं इसीलिए लिख रहा हूं यहाँ पर, हमने हर एक चीज, हम यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हम लिख रहे हैं, फिर हम तुमको समझा रहे हैं, ये सारे हम काम कर रहे हैं। तो आपको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल्स। सो first example, let us see first example. Okay, so consider the relation R on set of integers, on the set, that is your set of integers, of integers. Okay, that is given by R B, such that this is A B belonging to set of integers, and A minus B is divisible by 3, बाई 2। अभी हमने 3 वाला किया था, तो ये हमने 2 वाला एक लिख दिया, और ये रिलेशन लिखा। अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि आप पहले प्रूव करो कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, फिर उसकी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस लिखिए कि कितनी उसकी मैक्सिमम इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती हैं डिसजॉइंट, या जो उसको जो पार्टीशन फॉर्म कर रही है ना। सो so then this R is an equivalence relation, है ना, ये equivalence relation है, तो इसको भी हम शो करेंगे, is an equivalence relation। सो लेट अस सी, है ना, वन बाय वन रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, और ट्रांजिटिव देखते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से हम इसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो कंसीडर 3 एलिमेंट्स, आई एम जस्ट टेकिंग any 3 elements A, B, and C in set of integers। तो फर्स्ट वी कैन सी कि a माइनस a equals to 0, and 0 is divisible by 2। It means every element of Z, it means every integer is related to itself by this relation, है ना। तो you can just say since this is a minus a is just equal to 0, and this 0 is divisible by 2। Okay, therefore this is a is related to a, so you can just easily say this implies this R is reflexive। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, हमें शो करना था दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड देन वी टॉक अबाउट इट्स पार्टीशन। ओके, सो नेक्स्ट, तो if A is related to B, then means this is A minus B is divisible by 2, by divisible by 2। Okay, and this implies you can easily say this is negative टाइम, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका निगेटिव भी 2 से डिविजिबल होता है। तो दिस implies a minus of a minus b is divisible by 2, by 2, and this implies this is b minus a is divisible by
बाई टू, है ना, वो टू से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी फॉर्म की बी भी ए से रिलेट करेगा, तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, एंड यू कैन से दिस मीन्स आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, क्लियर। नंबर थर्ड, that is if this is a is related to b and we are just taking this b is related to some c, then you can easily then you can say that a minus b divisible by 2 and b minus c divisible by 2. So you can just say this is a minus b is divisible by 2, and this is b minus c, and this b minus c is divisible by 2. Okay, so this implies there exists some integer p and q, या फिर k1 k2 कुछ मान लो, तो there exists integer k1 and k2 such that a minus b is 2 times of k1 and b minus c just equal to 2 times of k2. So this a minus b is just 2 times of k1 and this is b minus c is just equal to 2 times of k2, where this k1 and k2 two integers, because divisibility का concept यही होता है ना, तो we can just have this is k1 k2 in integers. There exist two integer k1 and k2 such that this a minus b is just equal to 2 times of k1 and b minus c is equals to 2 times of k2. If you are adding b, although this is a minus b plus ka b minus c is just equal to 2 times of k1 plus 2 times of k2. Okay, and you can just see this is 2 times of k1 plus k2, और यहां पर आप कह सकते हो इज दिस दिस जो k1, देखिए k1 और k2 इंटीजर है तो सम भी इंटीजर होगा, तो दिस k1 प्लस k2 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ओके, तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास, अच्छा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, अगर हम माइनस बी और बी को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा a माइनस c, a minus c is just equal to 2 times of k1 plus k2. Okay, so this implies 2 is divides a minus c. So this implies this is a minus c is divisible by 2. 2 से divisible है, and this implies this is a related to c. You can say this r is transitive. R is transitive. Okay, तो एक चीज पता चल गया कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो देयरफॉर यू कैन जस्ट से बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो therefore the relation R is reflexive symmetric and transitive, and hence it is an equivalence relation. Hence it is an equivalence relation. Okay, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए,
अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से इंटीजर्स जीरो से रिलेट करेंगे, तो यू कैन से जीरो से रिलेट करने वाले हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे। तो यू कैन से जीरो इज देयर, जीरो इज रिलेटेड टू जीरो माइनस जीरो। हर एक मेंबर खुद से तो रिलेट ही करता है ना। प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, है ना। इस तरीके के सारे रिलेट वो जीरो से रिलेट करते हैं। या यू कैन से दिस इज जीरो इज रिलेटेड टू जीरो, एंड जीरो इज रिलेटेड टू प्लस माइनस टू, है ना, एंड जीरो इज रिलेटेड टू प्लस माइनस फोर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जीरो की क्लास बन गई। ठीक। इसी तरीके से अगर वन की हम बात करें, तो वन से हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स रिलेट करेंगे। वी हैव विच आर रिलेटेड टू वन। so so we have here plus minus वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास वन से रिलेट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास दो डिसजॉइंट क्लासेस हमारे पास फॉर्म हो गई। ठीक है। और इनके ये पूरा पूरा अगर इनका हम यूनियन लेंगे, तो हमारे पास, और इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। एक तो ये देख सकते हो कि इसके इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इनके मेंबर से रिलेट नहीं करते। दे आर टू डिसजॉइंट क्लासेस। इनका अगर हम यूनियन लेंगे, तो यू विल फॉर्म होल जेट। ओके। एंड इनका जो इंटरसेक्शन है, दैट इज योर इम्पटी। तो दिस इज फॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो दिस इज द डिसजॉइंट क्लासेस। क्लियर, देयर आर टू डिसजॉइंट क्लासेस इज here। ठीक है। तो यू कैन से दिस इज द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो इसको हम ई से कह सकते हैं। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस कलेक्शन इज इवन एंड ऑड, है ना। तो अगर हमारे पास रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन, दैट ए माइनस बी डिविजिबल बाई टू, तो हमारे पास इवन एंड ऑड जो नंबर है उनका कलेक्शन वो पार्टीशन हो जाता है इवन एंड ऑड सबसेट्स के अंदर। क्लियर। ठीक है। तो और डिटेल में लिख दें क्या। यू कैन जस्ट राइट हियर, लेट अस राइट इन मोर डिटेल, दैट इन दिस एग्जांपल यू कैन से, in this example we note that all just a second, ये लिख इससे लिख लीजिए, ताकि आप जब पढ़ें दोबारा, आप नोट्स को अपने रिटन नोट को पढ़ें, तो आपको चीजें बहुत क्लियर रहे। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बी नोट दैट, we can see or note that all even integers are related to zero, are related to zero to zero. Okay, because you can just see that is zero is related to plus minus two, zero is related to plus minus four, and so on. Zero is related to plus minus six and belong to R. Okay. And all odd integers and odd integers are related to वन, है ना। हम देख पा रहे हैं जैसे because वन is related to plus minus वन, and वन is related to plus minus थ्री, है ना। वन is related to plus minus फाइव as well. These are belongs to R. And you can see कि no odd is related to any to zero, because so also
no odd integer is related to 0 because the pair you can just say 0 plus minus 1 and 0 plus minus 3 will not satisfy the relation. It do not belong to the relation. To clear? Similarly, no even integer is related to 1. Clear? So thus you can say thus the set E, the even integers, the set E of even integers and set O O matlab odd integers of odd integers are subsets of set of integers satisfying the following conditions. The following conditions. Number first, that is your all elements of E are related to each other, है ना? हर एक एलिमेंट जो कि इवन में है दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड क्योंकि इवन से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑड ऑफ ओ ऑड are related to each other. So number second, no element of E is related to elements of no element of E is related to any element of O set of odd integers and vice versa. Okay. Number third, these are disjoint one. E and O are disjoint. And अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स का कलेक्शन आ जाता है. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज यू कैन से द subsets the subset E is called equivalence class containing 0 is called equivalence class containing 0 and it is denoted by the symbol by the symbol 0 like this. Okay, thus the subset
sort of odd integers is the uh, equivalence class containing 1. Equivalence class containing 1 and is denoted by like this, है ना? So we note that these are unequal, that this the class of 0 is not equals to the class of 1, and the class of 0 is also, you can write any multiple of 2 as a class representative, and class of 1 is equals to, you can just say 2k plus 1 time for any k, where k is any integer. Okay, so this is your all about your a relation that a minus b divisible by 2, and we get two disjoint equivalence classes, है ना? That is class of 0 and class of 1, and that will be collection of all even and odd integers. ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल एंड क्वेश्चंस करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर। हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। लेट अस सी। हाँ, लेट्स राइट दिस, रीड दिस। तो राइट अ क्वेश्चन हियर, एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे, दैट लेट n, n means set of natural numbers, collection of natural number, be the set of be the set of natural numbers and relation R on set of n, be defined by तो नेचुरल नंबर के सेट पे हमने रिलेशन को डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय नंबर number 1, this is two relations we define, this is R is this one, एक ही लेके चलते हैं, एक ही को प्रूव करते हैं। दूसरा ये दोनों लिख लेते हैं, एक हम कर दे रहे हैं, एक आप लोग करिएगा, है ना? x comma y such that this is x related to y which is integer, that is x plus y is just equal to 10। तो वो सारे पेयर लेने हैं जिनका सम जो है 10 हो रहा हो, and all are the natural numbers, this is x and y such that x and y from the set of natural number, and this is x plus 4y is just equal to 10। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, एंड सेकंड आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, डिटरमिन, देखना है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द above relation is reflexive, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ओके, तो ये सारी तीन चीजें चेक करना है। सो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, और फर्स्ट है ना, तो प्रूफ ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं हम लोग।
ओके, सो फर्स्ट वाले की तो, अरे भाई ये व्हाइट क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? ओके, सो गिवन जो रिलेशन है आपका फर्स्ट वाला, वो हमारे पास क्या है, दैट इज, दिस इज रिलेशन आर। तो x विल बी रिलेटेड टू y if x plus y just equal to 10, x plus y just equal to 10 for x and y in set of natural number. तो यू कैन सी कि 1 इज रिलेटेड टू 9, बिकॉज 1 एंड 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 2 इज रिलेटेड टू 8, 3 इज रिलेटेड टू 7, 4 इज रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज रिलेटेड टू 5, एंड इन दिस वे। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 10 एक नेचुरल नंबर है खुद, तो हर एक नेचुरल नंबर खुद से रिलेट नहीं करेगी विद दिस रिलेशन। ओके, तो अगर इनको हम लिखना चाहें इन अ सेट फॉर्म, तो यू कैन जस्ट राइट इन दिस वे, दैट इज योर 1 is related to 9 and 2 related to 8, and this 3 is related to 7, and this is 4 is related to, sorry, 6, 4 is related to 6. 4 is related to, hmm, 4 is related to 6, because 4 and 5, 6 का sum, फिर 5 is related to 5, and then 6 is related to 4, and uh, 7 is related to 3, and कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको हम लिख दे रहे हैं। अगर इनफाइनाइट है तो आप डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दिस इज 8 इज रिलेटेड टू 2, एंड दिस 9 इज रिलेटेड टू 1। सो दिस कलेक्शन इज अ, दिस कलेक्शन ऑफ पेयर्स इज अ रिलेशन आर, ठीक। तो क्लियरली यू कैन से कि दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके अंदर 1, 1 पेयर ही नहीं है। एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी इजिली से दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कैन से और नॉट रिफ्लेक्सिव because this is 1, 1 is it not in R, जबकि होना चाहिए था, since 1 is belonging to set of natural number. Okay, and R is not transitive as well. ट्रांजिटिव को देख सकते हैं, नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 9 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, एंड 9 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 9 एंड 9 इज रिलेटेड टू 1, बट दिस 1 शुड बी रिलेट टू 1 ना, तो 1, 1 इज नॉट इन आर, 1 is not related to 1. So this implies this is not transitive, but it is symmetric. But it R is symmetric. Sorry. Okay. So because, but R is symmetric, so you can easily say, because for all pair x and y, we have y comma x belonging to R. So this implies if x comma y belonging to R, it means x plus y is just equal to 10. इसको आप क्योंकि कम्यूट कर सकते हो, तो y plus x is just equal to 10. So this implies y comma x will be in R.
तो हर एक पेयर जो कि एक्स रिलेटेड टू वाई, देन वाई विल बी आल्सो रिलेटेड टू एक्स। तो ये सिमेट्रिक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इसी तरीके से सेकंड का प्रूफ आप करिएगा, सेकंड वाले को आप अपने से करिए, HW। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रूफ, कि अगर कोई रिलेशन गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक। और इक्विवेलेंस क्लासेस भी लिखेंगे, उसके ऊपर एक एक लेक्चर और हम आपको करा देंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर। अभी यहाँ तक की चीजें आप क्लियर कर लीजिए, और जैसा कि हमने कहा है कि आप सबको एक कॉपी बनाना है जिसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर हम ओरली भी समझा सकते हैं, बहुत शॉर्टकट में भी समझा सकते हैं, बट यहाँ पर हम स्क्रीन पे इसीलिए लिख रहे हैं, हर एक चीज को लिख रहे हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में लिखें। ओके, तो दिस इज रिक्वेस्टेड टू यू ऑल स्टूडेंट, जो भी हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो एक एक चीज को लिखें, और कहीं पर कोई डाउट, कोई भी चीज वहां समझ नहीं आ रही है तो यू जस्ट आस्क, यू कैन कमेंट इन अ वीडियो। सो हम उसे देखेंगे और वो हम रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा, आप एक चीज हमेशा मैथमेटिक्स में एक कोट याद रखिए, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप तभी सीखेंगे जब आप करेंगे। मैथमेटिक्स ओरल नहीं आती, मैथमेटिक्स सुन के नहीं आती, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ के नहीं आती, मैथमेटिक्स को करना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ना भी होता है, बुक्स को देखना होता है, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो आप सभी लोग एक नोटबुक जरूर बनाएंगे, और उसमें जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं उनको आप वन बाय वन, वन लाइन वन, जितने भी हम लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कंसाइज रखेंगे सिलेबस को, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जितना भी कराते हैं वो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में आपको करना भी है, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग मैथमेटिक्स की अच्छी हो पाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।